Yes. Take out your arithmetic copies. Copy number 4. Copy number 4. Maths, copy number 4. Maths, copy number 4. Have you got your copy ready? Vinayak, Maths, copy number 4. आज हम फिर से एक बार वो लिस्ट सेंड करेंगे जो हमने पहले सेंड करी थी, जिसमें मैंने लिखा था सब्जेक्ट्स और उनके सामने नंबर्स। मम्मी से बोलेंगे आप आपकी कॉपीज पे कवर चढ़ाकर उस पे वो नंबर्स लिख देंगे, जिससे आपको पता रहेगा किस नंबर की कॉपी कौन सी है। ऑल राइट, now open a fresh page. Today we are going to do an exercise on ascending and descending order. Manjeet, yes Manjeet. टेबल की कॉपी की न्यू कॉपी? टेबल की कॉपी, जिसमें आपने टेबल्स और नंबर्स करे थे, वो वाली कॉपी। प्रांजलि, are you ready with your copy? Yes, ma'am. All right, now put today's date, children, first. Today's date is 11/6/2021. Put the date, all of you. 11/6/2021. Hardik, are you writing, child? मैम हमें ऐसा ही करना है। डेट, Fresh page. Put today's date. 11। ईशान भी, आपने टेबल बुक क्यों निकाली है? मैंने बोला कॉपी जिसमें आपने 2 और 3 के टेबल्स लिखे थे, कॉपी निकालनी है बेटे। अरिथमेटिक कॉपी जिसमें हमने नंबर्स करे हैं 200 तक, जिसमें हमने 200 तक नंबर्स करे हैं। show me your copies, all of you. Lift it like this. Show me your copies, everyone. Let me see which copy is there in front of you. Visual, turn the copy, child. Yes, this copy. This is called your maths copy. Or is okay, good. Now put it down, all of you. ऐसी आपके पास 2 कॉपीज हैं, एक कॉपी नंबर 3 है, एक कॉपी नंबर 4 है। कॉपी नंबर 3 is for number names only. When I had sent you the message, I had put it there very clearly, only for number names. And copy number 4 is for all your number work, all the arithmetic work. So open a fresh page, put today's date. Have you all put the date? Now I'm going to share the screen. We are going to do an exercise on ascending and descending order. Remember ascending order, I told you ascending order means increasing order. ऊपर चढ़ते जाना, याद है? सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते जाना मैम ने बताया था। ascending order मतलब ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ना ascending order, और सीढ़ियों से नीचे आना decrease होना descending order. Descend means to come down. Ascend means to go up. This is ascending and this is descending. You climb up the steps. Increasing order, numbers बढ़ते जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. That is increasing order of the numbers. Forward counting. And then coming down, descending order, that is your backward counting. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
Yes, I told you. You have staircase in your house. आपके घर में सीढ़ियां हैं. ऊपर चढ़ना means ascending. नीचे आना means descending. याद है मैम ने ये सिखाया था आपको लास्ट मैथ्स पीरियड में. Do you remember? Very good. Some of you are giving me a thumbs up, so that means you remember. अब याद आ गया सबको. अब हम आज इसी की एक्सरसाइज करेंगे. I'm going to share the screen with you. You will copy the heading first. You will copy the heading. Excuse me, ma'am. Yes, Shivansh. मैम कौन सा पेज नंबर है? शिवांश, अरिथमेटिक की कॉपी निकालनी है. जिस कॉपी में आपने नंबर्स करे हैं वो वाली कॉपी चाइल्ड. ओके मैम. फ्रेश पेज. पुट टुडेज डेट. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम नंबर वाली कॉपी से करना है. यस आस्था. जिसमें नंबर वाली कॉपी में करना है. नंबर वाली कॉपी. यस, जिसमें आप नंबर्स करते हैं. ओके, जिसमें आप नंबर्स करते हैं वो वाली कॉपी. मैम नंबर वाली कॉपी और टेबल वाली कॉपी एक ही रहेगी? यस, नंबर वाली कॉपी और टेबल वाली कॉपी एक ही है. अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू लुक एट द स्क्रीन. First you will put today's date. You will put today's date and you will put the heading arrange in ascending order. All of you can see the screen. Ishanvi, maths copy child. Not the book, copy. Put today's date. Put the heading arrange in ascending order. When you finish writing the heading, give me a thumbs up. मैम कौन सी बुक निकालनी है? शुभ, मैथ्स की कॉपी निकालनी है जिसमें आपने नंबर्स करे हैं, टेबल्स करे हैं. वो कॉपी निकालिए. फ्रेश पेज ओपन करिए. आज की डेट डालिए और ये हेडिंग डालिए जो मैम स्क्रीन पर दिखा रही हैं. कम ऑन क्विकली. मैम. Yes, hurry up. Hassan, have you finished writing the heading? All right, children who have finished writing the heading, give me a thumbs up. मैम नंबर्स कहाँ हैं? अभी हम दिखा रहे हैं. आपने हेडिंग लिख लिया आस्था? All right, good. Now, मैम हेडिंग कौन सी है? Shubh, it is on the screen. जल्दी से लिखिए शुभ. Put the date. Don't make your funny faces. Okay, start with your work. Excuse me, मैम. Yes, Ronek. कॉपी में असेंडिंग डिसेंडिंग करना है क्या? कॉपी में आज की डेट डालिए, ये हेडिंग डालिए. अभी हम आपको नंबर्स दे रहे हैं. प्रांजलि, हैव यू पुट द हेडिंग? मैम मेरा हो गया है. हेडिंग लिख लिया आपने? All right, children. मैम मेरी हेडिंग हो गई. All right, now I'm showing you the next page. Put in the margin number 1.
Put number 1 in the margin. Put number 1 in the margin. And then 1 square 1 number. एक स्क्वायर में एक नंबर लिखेंगे. Copy 79, 9, 99, 12, 10. Yes, Vaishnavi. 79 पहले लिखना है, फिर कॉमा लगाइए, उसके बगल में 99, अगेन कॉमा, 12, 10. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, comma लगाना. Yes. Put the comma. Excuse me, ma'am. Yes, Shivansh. Excuse me, ma'am. अर्थमेटिक वाली कॉपी मिल नहीं रही है. Excuse me, ma'am. रजिस्टर में करिए, उसके बाद अरिथमेटिक कॉपी में काम कंप्लीट करके हमें सेंड करिएगा. मैम किस कॉपी में? अभी आप रजिस्टर में काम कंप्लीट करिए. ओके मैम. यस रोनिक. एक्सक्यूज मी मैम. यस. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अभी मैंने कितनी देर तक स्क्रीन पर हेडिंग दिखाई थी रोनिक? ये है हेडिंग. All of you mute yourself first. All of you mute yourselves. प्रांजलि माइक ऑफ करिए. शिवांश माइक ऑफ करिए. Excuse me, ma'am. Yes, Riya. Excuse me, ma'am. Yes, Vaishnavi. आपने कैसे करा है वैष्णवी? आपने हेडिंग लिखा, उसके बाद नंबर्स कॉपी करें. शो मी द नंबर्स. शो इट ऑन योर स्क्रीन. आपने नंबर्स नीचे नीचे क्यों लिखे हैं? वैष्णवी आपको स्क्रीन दिख रही है, मैम ने नंबर्स कैसे लिखे हैं? वैष्णवी, कैन यू सी द स्क्रीन? देन आपने नंबर्स ऐसे क्यों लिखे हैं? मैम ने नंबर्स इस तरह से लिखे हैं. इरेज इट वैष्णवी. यस अनाया. Yes. Vaishnavi, use your eraser, clean it up. Take your eraser, clean it up. परेशान होने की जरूरत. आप परेशान मत होइए. शुभ, this is not the way to behave. जब मैम एक बच्चे से बात कर रही हैं. वैष्णवी, erase that and write it again, child. Okay, ma'am. Yes. Now, Shubh, what do you want? Excuse me, मैम सेकंड नंबर नहीं दिख रहा. अभी मैंने सेकंड नंबर लिखा नहीं है. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Prashasti. Prashasti. Ma'am, yes, ma'am. Please see my copy. Pick it up. Let me see. Yes. Now, children, you have to arrange these numbers in the ascending order. Ascending means नीचे से ऊपर जाना, छोटे से बड़ा. राइट? अब नंबर्स को ध्यान से देखिए और आप बताएंगे
सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? नंबर्स जो है 79, 99, 12, 10, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इनाया, Inaya, which is the smallest number, child? Ma'am, 10. 10. So we will first write number 10. Right over here. 1, 0, 10. And then put a comma there. टेन से बड़ा नंबर कौन सा है नेक्स्ट? शुभ, 10 के बाद नंबर्स बोलिए। 10, 11, 12। 11 वहां पर नहीं है, 12 है। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा शुभ? Ma'am, 12. 12, that's right. So 10, after 10 all of you write 12. I'm using a thicker pen, children, so you can see. Write 12, comma, Vaishnavi, right, child? What's happened? You're writing? Let me see your copy. Okay, ma'am. Ma'am, answer लिखना है direct. We have written 10. We have written 12. Excuse me, ma'am. Yes, Anaya? मैम आंसर करके लिखना है, मतलब नंबरिंग करके लिखना है या फिर बिना नंबरिंग के? No, you have to put number 1 in the margin. Can you see ma'am has written number 1? मैम, Yes. Yes, Ria. That's fine. Okay. Now, after 12, which is the next big number, Ria? मैम my jacket. Yes, Arav. Yes, Ria? Excuse me, ma'am. 79. Very good. So we write here 79. Write the next number, children. 79. Ma'am, Yes. 9. Okay, fine, Arav. Yes. Good. Ma'am, just Now we put Mr. comma again. Now, which is the last number left over there, Hardik? 9. 9 मतलब? 9 means 99. Hardik? 99. 99. 99. Yes. So 99. very good. So we are going to write here 99. Got it? Very good. Now I'm going to write the next sum for you. Okay, put number 2 in the margin, children, all of you. Put number 2 in the margin. First, put number 2 in the margin, all of you. Now, we are going to write the next number. 83. Come on, write 83, all of you. Comma. 11. Comma. 2.
comma 77. You can all see the number. मार्जिन में पहले हमने नंबर 2 डाला. This is your margin, right? Then we have written the numbers 83, 11, 2, 77. Now we are going to write the answers. We will look at the numbers. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, my answer is complete. Okay, Arav, very good. So, Arav, give the answers. Hayat, you also finished? Yes, ma'am. Okay, good. Arav, which number are we going to write first? Ma'am, 2. Very good. So we are going to write 2. I'll take another color so that you can see the answers. We write here 2, comma. Which is the next number, Arav? 11. 11. Okay, first 2. 2 से बड़ा है 11. So we write here 11. Children, keep writing. Yes, Arav, the next number will be 77. 77. That's right. So we write here 77. Okay, and the last number is going to be 83. 83. Very good. So I'm going to put here 83. Children, I hope all of you are writing. Finish number 2. Ma'am, I is done. Okay, Aram. Very good. Very neat work you all are doing, children. That's very nice. I can see all of you doing your work so nicely. Good. It's very nice to see you children sitting and doing your work so neatly. Ma'am, I have done my work. Visual, okay, very good. I have done my work. Yes, Pranjali, very good. Ronak is also done, very good. Ma'am, I have done. Okay, Shivash. Now, Excuse me, ma'am. put number 3 in the margin. Excuse me, ma'am, I have done my work. Yes, Anaya, very good. Yes, Vaishnavi is also done. Very good, Vaishnavi. Manjeet, let me see your work, child. Manjeet, let me see your work. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, Rishita. Yes, Manjeet, good. You are also doing it. Yes, Rishita, good. Ma'am, see my picture. Yes, Prashasti. You have to lift your notebook, child. Okay, good. Fine. Now we are moving on to sum number 3. And can see. Yes, I can see Omash. Very good. Okay. Now put number 3 in the margin, all of you. Ma'am, I am done. See my work. Put number 3 in the margin, all of you. Here's the margin. Number 3. And I'm going to write the numbers over there. Adiraj, are you doing your work, child? Lift your copy. Let me see. All right. Now put number 3 in the margin. Sakina, show me your work, child.
मैम ये मैम Yes, very good. Okay, good, Astha. You also done neatly. Now write the third sum. The numbers are 15, 1, 5, 15, comma, 25, comma, 5, comma, 65. Now we will see the answer. मैम may I? Yes, Aram, let's hear the answer. 5. The first Five, number, ma'am. number Ma'am, 5, five. okay, comma, Comma 15, 15, 25. okay. You have to remember the comma, don't forget the comma. 25, Comma 61. Comma 20, 65. comma, 55. Comma 65. Okay. Right. So with that, Ma'am. yes, Aram, thank you. We have done 3. Thank you, ma'am. Yes, Hayat has also finished. Okay. मैम आपने 55 लिख दिया है. Oh, okay, okay, okay. Just a second. Yes, Inaya, you're right. It is 65. Let me just erase it. Now this is a nice white board. Like in school we use a blackboard. I'm using the whiteboard for you. So we have 65. Okay. Now listen carefully to what I'm saying. Now listen carefully to what I'm saying. We have done one exercise today. We have done one exercise. Now I will be sending this exercise in the group also. In case if you have missed out anything, children, you can see from there and do your work. And I will send you one exercise where you have to arrange the numbers in descending order. Right? अभी हमने क्लास में जैसे असेंडिंग ऑर्डर करा है, इसी तरह हम आपको एक एक्सरसाइज भेजेंगे दैट इज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर. यू विल डू इट and then you will send it to me on personal. Everybody will send it to me on personal. Right, all of you? Yes? Did you hear what I said? Give me a thumbs up. Okay. Tomorrow is Saturday. Tomorrow we have English. And tomorrow in class we will be doing the question and answers of Cradle Song. So you will keep your English literature copies ready in the first period. Right? Tomorrow all of you will be ready with your English literature copies in the first period. Yes, Ronik? Repeat कर दीजिए. Tomorrow is Saturday. You have English tomorrow. We have only one period tomorrow and that is English. We will be doing the question and answers of Cradle Song. कल हम लोग Cradle Song के question answers करेंगे. उसके लिए आपको अपनी pencils, erasers एंड इंग्लिश लिटरेचर कॉपी क्लास में रेडी रखनी है. हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. राइट? नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज. आई होप आज का काम सबने आराम से क्लास में कंप्लीट कर लिया. ओनली 3 सम्स आई हैड गिवन. ऑल ऑफ यू हैड फिनिश्ड योर वर्क टुडे. गिव मी अ थम्स अप.
Very good. Now all of you join your hands. We'll say our prayers. This was the last class. Yes. मैम अगला कंपटीशन कब होगा? बेटे वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, जब स्कूल से नोटिस आएगा तब हम आपको बताएंगे. Right? Now all of you join your hands, close your eyes. And Hassan, I would like to speak to Mummy after the class, all right? Thank you, O God, for all the people from whom I have learned today, talked and shared my knowledge. Thank you for all the people who have been kind to me today, for those who have taught me the lessons which I must know, for granting me good knowledge to do better in my life. Thank you for being with me every moment of this day and keeping me safe. This I ask for your love's sake. Amen. So good morning and thank you, children. Have a nice day. And Aradhya, wish you a very happy birthday once again. Enjoy your day. Thank you, children. Bye.